Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start the first chapter of English from the book of 7th class, and the first chapter is the last sermon of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. I will tell you the meaning of difficult words, and at the same time we will translate the paragraphs you can see here. So it's page number 1. And lesson number 1, the last sermon of the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Last का मतलब आखिरी, sermon का मतलब खुतबा, आखिरी खुतबा जो कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया. So we start from the first paragraph, and the first paragraph starts: Islam covers all the aspects of human life. इस्लाम जो है अहाता करता है ज़िंदगी के, इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का. कवर्स का मतलब होता है अहाता करना, आस्पेक्ट्स पहलू, एंड ह्यूमन लाइफ इंसानी ज़िंदगी. इट इज़ नॉट ओनली आ रिलीजन बट आल्सो अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ. ये सिर्फ़ एक मज़हब ही नहीं है बल्कि ज़िंदगी गुजारने का एक ज़ाब्ता हयात है. ठीक है. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह अलमाइटी. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं. एट द ओकेजन ऑफ परफॉर्मिंग हज अदा करने के मौका पर. ओकेजन का मतलब होता है मौका, परफॉर्म का मतलब अदा करना. ही के बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हैं. ही डिलीवर्ड हिज लास्ट सरमन ऑन 9 ज़िलहज 10 AH. ठीक है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा 9 ज़िलहज 10 हिजरी को दिया. ही एड्रेस्ड, ही यहाँ पे फिर वही ब्रैकेट के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि हम आपसे की बात कर रहे हैं. ही एड्रेस्ड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब हुए यानी कि कलाम किया. मोर देन 1000 कंपेनियन, मोर देन 100,000 कंपेनियन, 1,00,000 से ज़्यादा लोगों को खिताब किया. कंपेनियन का मतलब साथी. एंड एडवाइज देम टू डिवोट देयर लाइव्स फॉर द सर्विस ऑफ इस्लाम, और उन्हें इस बात की नसीहत की, डिवोट का मतलब वक्फ़ कर देना, दे देना, कि वो अपनी ज़िंदगियाँ फॉर द सर्विस ऑफ इस्लाम, इस्लाम की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दें. सो डैट, ताकि दे माइट गेन का मतलब हासिल करना, टू गेट द ग्लोरी ऑफ अल्लाह अलमाइटी, ग्लोरी का मतलब खुशनुदी, रज़ा, अल्लाह की खुशनुदी रज़ा हासिल कर सके. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को जो 1,00,000 साथी थे उनको नसीहत की कि अपनी ज़िंदगियाँ इस्लाम के लिए वक्फ़ कर दें, इस्लाम की खिदमत के लिए, ताकि वो अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हासिल कर सकें. ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम taught them how to lead their lives according to the true spirit of Islam. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बताया, यानी कि किसे बताया, दैम का मतलब हम कंपेनियन की पहले बात कर चुके हैं, इसी की इधर ही जिक्र वही दोबारा हो रहा है. ही taught them how to lead their lives according to the true spirit of Islam. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सिखाया कि अपनी ज़िंदगियाँ इस्लाम के सही जज्बे के मुताबिक कैसे गुजारी जाएँ. अकॉर्डिंग का मतलब तो के मुताबिक, ट्रू सच्चा, स्पिरिट जज्बा ऑफ इस्लाम के. So we translated first paragraph, and there is also some points on the other paragraph as well. But before going towards that, I want to tell you that there is a question: how many companions were present in the last sermon? So they have after explaining the paragraph, we can see that they are asking a question from us that how many companions were present in the last sermon. So you are to answer the question. So the answer is in the very paragraph, but I have written it for your convenience on the other page. That is, answer number 1 is more than 100,000 companions were present in the last sermon. You can also write it down by saying it here, but you can also follow it from the paragraph, that we can see that more than 100,000 companions. Okay, so we find the answer of the question from this paragraph. I hope you will understand this paragraph. Before moving towards the other paragraph, you have to write the answer on your copies. Okay, now moving towards other page, next page is which is the continuation of the first paragraph. In the sermon, अपने खुतबा में he gave such guidelines. he सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने gave दी such guidelines, रहनुमाई, to the मुसलमानों के लिए, Muslims and the entire humanity.
مسلمانوں کے لیے نہیں صرف بلکہ انٹائر کا مطلب پوری ہول پوری انسانیت کے لیے دی. ڈیٹ میں ایم ٹو جس کا مقصد تھا دیئر سوشل مورل پرسنل اینڈ پولیٹیکل لائف. ٹھیک ہے, اس کا کیا مقصد تھا؟ ایم ٹو امپروو کا مطلب بہتر کر دینا. دیئر سوشل ان کی سماجی مورل اخلاقی پرسنل ذاتی اینڈ پولیٹیکل لائف اور سیاسی زندگی کو بہتر بنانا. کیونکہ اسلام سے پہلے جس طرح کا دور تھا وہاں پہ لوگ جہالت کی زندگی گزار رہے تھے, ان کو کسی بھی آسپیکٹ کے بارے میں صحیح طرح رہنمائی نہیں تھی, جہالیت تھی. ٹھیک ہے, تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو گائیڈ لائنس دی, لوگوں کی رہنمائی کی کہ وہ اپنا معیار کیسے بلند کریں, یعنی سماجی اخلاقی اور ذاتی طور پہ اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنائیں. Here is the extract from the sermon. So جو آپ سے نے خطبہ دیا اس کا نچوڑ, اس خطبے کا جو نچوڑ ہے وہ اگلے فردر پیراگرافس میں ڈسکس کیا گیا ہے, تو وہ ہم اگلی ویڈیو میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے.